एक मिनट. Hello everyone, welcome to the daily Hindu analysis, which becomes extremely important if you're preparing for the CLAT, CUET and IP-MAT examination. This purposely helps you cover your current affairs sections and the passages that you come across in your CLAT examination. This helps you in the general aptitude test portion of your CUET examination, and not to forget the language section. And also if you're preparing for the IP-MAT, this becomes extremely important for your personal interview, which have a huge weightage in deciding whether you would land up into your favorite IM or not. Without wasting any time, let us look our page now. The front page. The front page says Trump Modi signal trade talks may resume. Now, since everyone knows India and US were like all-time high when we talk about the foreign relations that India and US had, like the diplomatic relations that they had, but only after the Pahalgam attack, and since India had been buying the Russian oil, Donald Trump, or let's say the President of the United States, imposed a 50% tariff on Indian products, right? Now, since tariff was added on the Indian products that were getting imported to US became expensive, and hence the demand would decrease, which would eventually help the manufacturing sector of India, reducing the jobs and also the purchasing power of the common man working there. Now, India retaliated by visiting the SCO, properly visiting the SCO, and Modi ji getting closer to Russia and China, which can be seen in all across your social media and the different newspapers that you would be availing to. Now, since India and China are coming closer, with this, yesterday only, Mr. Donald Trump had got a right wherein he said that is his very good friend and he would soon resume bilateral talks with India so that there can be a treaty finalized, because India and US have been trying to come to a point wherein they want to invest more into each other's country, but the only thing stopping them is that US is not very happy because India has a trade surplus with US. So US have had their own issues due to which we could not work upon a treaty. And then with the Pahalgam attack and eventually all of these things happening, the relations between India and US worsened, right? Now with this, let us see if there would be a treaty or not. I'm not getting into this because I've already taken this topic more than a couple of times. People who've been watching it would be understanding. That is why I would not get into a lot of depth into this topic. So welcome to Water Day of CLAT. So let us start with the first news. So the first news is about GERD, which is the Grand Ethiopian Renaissance Dam. So now this dam becomes very important because now this in three nations, right? So this has become a dispute between Sudan, Egypt, and Ethiopia. So we have the Blue Nile here. This is the Blue Nile. This is the Blue Nile. Here the Ethiopia is building a dam by the name Grand Ethiopian Renaissance Dam. जिस वजह से इजिप्ट को क्या लग रहा है कि जो उनका वाटर सप्लाई है नाइल से वो कम हो जाएगा एंड इजिप्ट विल इवेंचुअली फेस वाटर क्राइसिस और वाटर स्कैर्सिटी, वाइल एट द सेम टाइम सूडान को यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर आप यहाँ पे डैम बनाओगे तो इस डैम की वजह से देयर कुड बी सीवियर फ्लडिंग हैपनिंग इन सूडान. सो दिस डैम द like this got inaugurated now, but the problem is this dam has been into controversy or has been into issues since the past 3 4 5 years. The only reason is because this is a trilateral issue comprising of three countries, which is your Sudan, right? Second is your Ethiopia जहाँ पे ये डैम बना है, and third is your Egypt. Egypt is thinking that the water supply to Egypt might be slow and might be affected, due to which Egypt might face a lot of water crisis in the coming years. While at the same time, what Sudan is thinking is that this dam would eventually lead to a lot of flooding in Sudan. So this has become a point of contention between these three countries, and hence GERD becomes very important. But the thing that we have to remember is that the longest river of the world is Nile. The Blue Nile पे बना है, Blue Nile, White Nile दो है Niles, and this is the longest river of the world, situated in Africa, issue between three nations. And also try to remember the capital of these three countries. Now the second news, the third news is about the UPI UPU integration project. So this is about the Unified Payment Integration System of India. UPI आप सबको मालूम है जिसको बनाया है NPCI ने, which is the National Payment Corporation of India, which is a statutory body formed by the Payment Settlement Systems Act of 2007. Everything that I said becomes important for your examination because NPCI is a statutory body. This is something you should know. जितने भी ATMs लगते हैं NPCI लगाता है, जितने भी आपके डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं NPCI लगाता है, जो आपके रुपए कार्ड पेमेंट्स होते हैं वो NPCI कराता है. NPCI is a statutory body formed by the Payment Settlement Systems Act of 2007. यूपीआई ने क्या किया है अभी? यूपीआई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनपीसीआई. यूपीआई ने यूपीयू के साथ एक इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट साइन किया है. ना व्हाट इज यूपीयू? यूपीयू इज योर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन. ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ यूएन.
AEGIS, एजेस ऑफ यूएन, वर्क्स अंडर यूएन। और दुनिया भर में जितने भी पोस्ट होते हैं, पोस्ट का काम होता है उसको इंटीग्रेशन, उसको एक यूनिवर्सल कोडिंग का काम करता है ये। इंडिया में पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1854। इट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी, राइट? Also, now this organization, which is UPU, Universal Postal Union, which works under UN, was established in the year 1876, and India was one of the first countries from Asia to become a member of UPU. Now, UPU and UPI have signed a MOU, which will help UPI reach to other countries also. As we have seen in the past, सिंगापुर, नेपाल, UAE ऐसी कंट्रीज़ पे हमारा UPI एक्सेप्ट होने लगा है। तो जैसे जैसे UPU और ऐसे हम इनिशिएटिव्स लेंगे, ग्लोबल इनिशिएटिव्स लेंगे, दिस विल हेल्प आर UPI, विच इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम, to reach multiple or different countries of the world, and which will make our PI settlement system a global settlement system, right? So this U becomes important. इस न्यूज़ में आप UPU समझ के रखो, that would be more than sufficient. Coming on to the next news, which is about the election of the Vice President of India, as we have already discussed in the previous video, or let's say in the last lecture, that CP Radhakrishnan has become the new Vice President of India. There shall be a Vice President of India, is mentioned in Article 63 of the Indian Constitution, which means Vice President is a constitutional post. The Vice President is elected by all the MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha, whether be it elected or whether be it nominated. Thirdly, the Vice President is appointed by the President. The oath is administered by the President. He takes the oath in the name of safeguarding the Constitution of India, right? In case of the death, removal, or resignation of the President of India, Vice President becomes the President of India. He has two primary functions to follow. One is that he is the ex officio chairman of Rajya Sabha, which means the reason because he is the Vice President of India, he automatically becomes the chairman of the Rajya Sabha. So he is the chairman of the Rajya Sabha, and he also has the casting vote. So in case of a tie in the Rajya Sabha, he will have the casting vote, right? Removal समझ गए, अपॉइंटमेंट समझ गए, रूल समझ गए, और इसके अलावा व्हाट एल्स बिकम्स इंपॉर्टेंट? एस राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. व्हाट एल्स? वाइस प्रेसिडेंट में और क्या पढ़ना है? हाँ, qualifications of Vice President of India: he should be at least 35 years in age, he should be eligible to become a member of Rajya Sabha, he should be a citizen of India, and he should not hold any office of profit, which means he should not be drawing any sort of salary or any sort of economic benefits from the government of India, right? So all in all, this becomes important for our examination, and also he is the second citizen of India, just after your President of India. I guess that is enough. No, we have 2025. So this is a multilateral exercises. As I have already told you, जब फ्रेंडली नेशंस होते हैं तो वो आपस में एक्सरसाइज करते हैं कि वॉर टाइम में हम साथ में कैसे लड़ेंगे। तो अपनी इंटरऑपरेबिलिटी, अपने आर्म्स, एम्यूनिशन, वेपन्स को यूज़ करने के लिए फ्रेंडली नेशन साथ में आके एक्सरसाइज करते हैं कि इन केस ऑफ अ वॉर हाउ डू वी टैकल इट। जैसा हम देख रहे हैं कि रशिया एंड इंडिया ऑल्दो हैव बीन एवरग्रीन फ्रेंड्स, हम जितने आर्म्स एम्यूनिशन मंगाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं आज भी, सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से आज भी। हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें बहुत सारे आर्म्स पुर्जे आज भी, जो हमारे बड़े बड़े आर्म्स हैं, एम्यूनिशन हैं, उनकी सर्विसिंग आज भी रशिया होने जाती है, क्योंकि रशिया टेक्नोलॉजी कोई कंट्री किसी को ट्रांसफर नहीं करता, बना के दे देता है, सर्विसिंग वो अपने वहीं कराता है। कंट्रीज़ भी ऐसे ही करते हैं। जैसे आपको रशिया ने कोई वेपन दिया तो रशिया आपको वेपन देगा और रशिया आपको सर्विसिंग देगा। तो आप कभी भी ऐसे कंट्री के साथ रिलेशंस बिगाड़ ही नहीं सकते जिस पे आप 70% वेपन्स के लिए डिपेंडेंट हो। अब जैसे हमने राफेल मंगा लिया, फ्रांस से मंगा तो लिया, अब मान लो राफेल में कल को कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे आपकी गाड़ी में भी आती होगी, कोई मेंटेनेंस है, कोई ओवरहॉलिंग है, कुछ भी चेंज करना है, तो वो कहाँ पे होगा? दसॉल्ट में ही होगा, राफेल में ही होगा, फ्रांस जाएंगे। और हमारे वो फाइटर जेट्स फ्रांस जाते भी हैं अपनी सर्विसेज के लिए, मेंटेनेंस के लिए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई, तो आप ऐसे मत समझो कंट्रीज़ ने एक बार आपको कोई चीज़ दे दी तो उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करते, कभी नहीं करते। टेक्नोलॉजी कभी ट्रांसफ़र नहीं की जाती अनलेस बहुत अच्छे रिलेशंस हो, और टेक्नोलॉजी वही ट्रांसफ़र की जाती है जो पुरानी हो चुकी होती है। कभी भी कोई भी अच्छे रिलेशंस होंगे कंट्रीज़ के, यूजुअली दे विल नॉट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, वो आपको बना के दे देगा। इट इज़ लाइक फ्रेंचाइजी मॉडल जो दुनिया में भी इंप्लीमेंट होता है। फिलहाल इंडिया रशिया क्लोज तो है ही, और क्लोज आ भी रहे हैं। एक एक्सरसाइज है जापर्ड जो रशिया कराता है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। रशिया अपना छोटा भाई मानता है बेलारूस को, क्योंकि रशिया जब 1991 में 15 पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हुआ, तो बेलारूस इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने रशिया का आज भी साथ नहीं छोड़ा है, और बेलारूस रशिया को अपना आज भी बड़ा भाई मानता है, जिस वजह से बेलारूस में उसी का गवर्नमेंट बनता है जो रशिया चाहता है, और बेलारूस उसको हैप्पीली एक्सेप्ट भी करता है। तो बेलारूस इन अ वे इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज बेलारूस खुद तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उसके पास बैकिंग किसका है? रशिया का। और रशिया बेलारूस पे ये कह सकते हो एक तरीके से जान भी छिड़कता है या दिल भी देता है, या इतना इतना रिस्पेक्ट करता है, इतना प्यार करता है, इस बिकॉज कभी भी बेलारूस ने रशिया से अलग होने की कोशिश नहीं की। वो 1991 में भी नहीं चाहता था, बट देयर वर सर्कमस्टांसेस, बट बेलारूस हैज़ नेवर लेफ्ट रशिया। तो रशिया का सबसे क्लोज अलाय है बेलारूस, और बेलारूस में चीज़ें वही होती हैं जो रशिया चाहता है, एंड बेलारूस हैप्पीली एक्सेप्ट्स इट। मतलब बेलारूस एक तरीके से आप मान के चलो रशिया ही है, बस वो एक कंट्री है ऑल इन ऑल। तो बेलारूस और रशिया मिलकर ये एक्सरसाइज करा रहे हैं, जिसमें इंडिया भी जा रहा है, और इंडिया की तरफ से 7 हमारे आर्मी के जवान गए हैं, तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे, विच वुड बी टेकिंग प्लेस निजनी रशिया। निजनी नाम का शहर रशिया में एक्सरसाइज है, जो कि रशिया और बेलारूस
मल्टीपल कंट्रीज को मिला के कर रहे हैं, जिसमें रशिया इंडिया पार्टिसिपेट करने जा रहा है. सो लेट्स से रिसेंटली एन इंडियन आर्म फोर्स कंटिजेंट डिपार्टेड फॉर रशिया टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज Zapad 2025. Just remember, Zapad was conducted by Russia and Belarus, in which multiple countries were there and it also participated in the same. That is, thank you. And probably tomorrow, if you're looking for a full-fledged course to prepare for any of these examinations, CLAT, CUT or IB-MAT, you can give us a call on the number given in the description, and also you can visit the app. For now, thank you so much. And if you're liking these videos, please like, share, subscribe, and share it with friends who might need this. For now, thank you so much.